Okay, so in IELTS speaking, first of all, you'll be getting 3 rounds in IELTS speaking, and 15 to 20 minutes, 15 to 45 minutes there will be of speaking session that will be of 15 to 45 minutes. Initially, it is of 15 minutes, but it depends on the interviewer. Sometimes the interview can last till 30 or 45 minutes as well. Right, so it depends on the interviewer, as like if they want to ask more questions, they can ask in the first round, sometimes in the third round. Okay, Okay. so the first set of questions asked to almost all question students is the may I know your full name. So here you need to explain, you need to tell your full name. That should include your first name, your middle name, and your last name. If you do not have any middle name, you can simply say your first name and your last name. And then if they ask how may I call you, then you can say like the first question answer is my full name is Khushbu Saluja, and you may call me by my first name Khushbu. Okay, Yeah. so this way you can answer it. And may I see your ID? So you can show your passport, the front page of your passport. And sometimes you need to hand over your passport to to the interviewer. You can, right? And while taking it back, you need to say thank you. So these are the basic things which are being checked or side by side on the during the speaking session. Okay. Okay. So the last question is, where do you come from? So these are the basic questions which are being asked, and you need to answer these things in 2 to 3 lines, but there are no marks of these things. These questions are just asked to make you comfortable with the interviewer. Okay, and interviewer अपने बारे में भी थोड़ी सी introduction initially देते हैं. Clear? Mm. So after this, round one will begin, and some introductory questions will be asked. Like questions related to you are being asked in this round. You need to answer these questions in 2 to 3 lines. Sometimes you can answer in 3 to 4 as well. It depends on the question type. Okay. And you do not have to give the explanation in depth manner. The example is like, do you like listening music? So you can say, you need to paraphrase it first. Yes, I adore. Adore means I like it. I adore listening music. And there are several genres of music available these days. My interest is towards listening Bollywood songs, which caters relaxation to my mind. So in this way, you can explain your answers, right? You need to first say yes, no, or paraphrase the statement, then make a base of your answer, then exactly come to the point, like question का जो basic point था उस पे आ जाओ. So इस तरह से आंसर करोगे तो आपको आराम से 2-3 लाइंस बनाने को मिलेंगी. और समटाइम्स क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप पैराफ्रेजिंग वगैरह कर रहे हो तब आपके माइंड में आंसर इतनी देर में स्ट्राइक कर जाएगा. ठीक है, Mm-hmm. आउट ऑफ आंसर नहीं होगे, आपको पॉज लेना नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो दीज आर स्मॉल ट्रिक्स विच विल बी लेट यू लाइक यू विल बी getting these things in the discussions. Okay. Okay. Yeah, so these are some questions. Are you working or doing any study? So what work do you do? Do you like your job? So these questions are usually asked to those who are working right now. Okay, if you will be showing that you are doing study, so they will not gonna ask you what type of work you're doing. Okay, so if Mm-hmm. you will say in your first answer that I'm a student, I'm doing this and this from this and this college, and then they will ask the further question related to your study, not related to your work, obviously. Okay, Okay. so questions का जो डायरेक्शन है वो as per your answers उनका switch हो सकता है. ठीक है, Okay. so round two, any doubt in round one? You want to ask anything? So round one is just introduction. It could be any introduction question, right? Yes, yes. And Okay. any topic can be there, like your hobby, your choice of bags, which type of bags you carry and all, right? Okay. Dresses and all. Any topic can be there. Clear? Yeah. And there is one more thing is left. Sometimes they ask why to the students. So students feel like in the previous answer, I have not clearly mentioned my answer. So that's why the interviewer is asking me why. So don't bother about it.
Like whatever you have answered, they need to check you, like whether you can paraphrase your statement, or whatever you have said, you have said it genuine on Mhm. genuine basis or not. So these are the things they ask you why. Okay, so be confident enough and just answer, or just paraphrase the statement, or just stretch or exaggerate the statement whatever you have said in the previous answer. Okay, you Okay. not have to stop there. You need to exaggerate your answer at that time, right? And be true, be genuine, because otherwise you will go stuck somewhere. Yeah, yeah. Okay. Okay. So round two is like a cue card topic. You'll be get sorry for the disturbance. You'll be getting a cue card topic, and just like this on the screen you can see, describe a place full of color. So these are the some questions when you need to speak on this topic for 2 to 3 minutes, and you need to cover all these sub questions. And except the sub questions, you can add on anything in the speech that is of 2 to 3 minutes, but you need to fulfill all these sub questions clearly. Okay, and it doesn't matter like you if you're randomly adding these stuff, these sub questions in your speech, that's fine. Okay, the purpose is you need to add each and everything, you need to add all these sub questions in your answer. Okay, so one Okay. minute will be given to you. You need to prepare it, and then after 1 minute, you need to speak. Okay, so how to use this 1 minute? So there is a strategy named spider diagram. You can pursue this on the rough paper. There will be a rough paper given to you, and when the card topic will be given to you. So on the rough sheet, you can write these things as per the question. Like in the center, I have written place full of color. The question was describe a place full of color. Okay, so I have written the question here, and then these are the sub questions which are being asked. So in this way, if I make a spider diagram in 1 minute, and the main points, the key points or keywords I can say, then I cannot skip any question, any sub question, and my story will be like will be perfect. Okay, clear? Okay. So Yes. for till now, it's same as academic IELTS, right? Yeah, it is completely same. There are two differences only. That is in reading module, and Oh, okay. yeah, and in writing task one. That's it. Okay. And in this cue card also, they will give me the questions. Yes. Like, okay, the topic, cue card, then questions. Where is Yes. it Yes. and all. Yes. Okay. Okay, so this is a simple answer as per the spider diagram which I have made. Okay, these are some Yeah. basic points which I have made, and on the basis of that, I'll be speaking this. Okay, so this is Okay. just a sample answer for the students. Even I have made all the sample answers of the recent PDF which is going on these days. Mm-hmm. And such type of help I used to give to my students. Okay, Okay. Okay. these are some vocabulary which I have added. Right? Okay. Yeah. You have any query till now? Uh, so where I did IELTS when I was in India, so they gave me for cue cards, for any cue card, there will be one introduction. So with that Just like a format. introduction, I could like modify all the topic. I just start with it, and then Mhm. I can talk about the topic. So that I don't I remember can that. also, yeah, no worries. I can also give you Yeah, that particular format type of stuff. Okay, you yeah. can pursue it, right? Okay, okay, sure. I have already made it, but on screen I have not added it, right? Okay, okay, sure. This is actually for those like this is a general way of following it, na? Because everyone do not follow the formats kind of stuff, right? And Yeah, many yeah. students require 7 each, 8 each stuff. So Mm. on that case, it doesn't work. Okay. So avoid using the formats for the students who require more than 7 bands or more than 6.5 bands. So that's why I have not added it here. Okay. Okay. Fine. So over to the third round three. If you have any query till now, you can ask me, and then we can proceed further. Yeah, we can proceed. Okay. So the third round is the follow-up round, just like the academic, IELTS academic. So on the basis of your cue card or on the basis of your answer, with the speech you have said, right? The questions Mm. will be asked in the follow-up round.
These are not the general questions. These questions are not related to you. This is related to the pe Topic. people or topic, and you need to answer these questions in the general way. Okay. Okay, okay. Yeah. Is color important for clothing? So it's a general question, right? Color is Yeah, important. So it depends on the person's perception, but I feel that the color is very important for the clothing because it provides positivity. Sometimes it provides it depends on the atmosphere or it depends on the ambience where we are going. So it is important, right? We choose the okay, colors, we choose the color of the clothing color as per the location where we are going. Okay. okay, And what colors are the least popular in your country? So as per India, you can speak, or if you want to speak as per in Canada, you can also, right? So okay, in this way, these questions will be asked. Okay. okay, So that's all about the speaking module. Okay. And okay. you need to answer 3 to 4 lines, we can Mm-hmm. say, right? In the third round. Okay. Yeah. Yes. Any query in the speaking? No, no, no. All good. All good. Okay. Fine. So the speaking session will be on in the separate day. The reading, listening, and writing will the exam of reading, listening, writing will be on the same day. And in Canada, sometimes yeah, like there is a slot available for the students. Like in the morning, you are giving your IELTS, writing, reading, and listening, Mm-hmm. and in the evening you can give the speaking. So it depends on the availability of the time. Otherwise, it will be on the next day. Okay. Okay, yeah, I haven't checked it. Where does it show that when is Just log in next? your IELTS IDP ID. Do you have it? Okay. Yeah, yeah. है ना? एंड जहाँ पे आपका वो वेन्यू एंड ऑल शो हो रहा है ना, वहां पर आपका स्पीकिंग Mm-hmm. सिलेक्शन वाला स्लॉट वाला एरिया आएगा. यू कैन सी फ्रॉम देयर. Okay. I'll go and check. मैंने खोला ही नहीं हो तब से. या okay. So after speaking, which module we should proceed? Listening is completely same. Do you want the discussion of listening, the overview of listening? No, if it's like totally same, then no. Mhm. Completely same. There are 4 sections. I can show you. Just a wait. That's why I was getting I was feeling like no one usually say I want all the modules, this overview of all the modules. So this is the reason, Hannah, why you wanted it. Yeah, because I did like it. I just wanted to show that there is no difference or something. I just wanted to know Yeah, if same. Like I knew there's minor difference, but I just wanted to just make sure. yeah. Okay. So we can proceed with the reading now. Listening is completely same. There will be 4 sections, right? First section, audio will be played, and you'll be given the questions on the sheet. Just you need to listen and answer it. And there will be separate answer sheet, and you need to transfer your answers after solving the whole listening. You'll be getting 10 minutes to transfer your answer in the listening. Okay? Okay. Yeah. So I'm not actually worried about speaking and listening. I'm pretty confident and okay about it. Only thing is reading and writing. Writing, cause I don't know the pattern, and like it's been long time. I don't remember anything now. Okay. No And worries. I'll be helping you out. No worries at yeah, all. yeah. So these are just 2 modules where I actually need help. Yeah. Otherwise, it's all good. Okay. Okay. Are you able to see the screen of reading pattern? Yeah. Okay. Fine. So in reading, just like the IELTS Academic, you will be getting 3 passages. Okay. And the total timer for reading will be 1 hour. There are similar things, but wherever it will be the difference, I'll let you know, right? Okay. So the 3 passages are there, okay? And basically, the in IELTS GT, okay, you will be Mm-hmm. getting first 2 passages. There's a difference in first 2 passages. In first passage, you'll be getting first 10 questions or first 7 questions, depends on the examiner. First 10 questions or first 7 questions. Mm-hmm. Passage 1, okay, that will be on the 1 page for passage 1. And then on the basis of that passage,
you'll be getting some questions like 6 or 7 questions. Okay. Then again, you'll be getting this next part of that particular passage on the next page. And Mhm. 8 to 13 questions will be dependent on the second page of the passage. Okay. Okay. There is a difference, and it becomes easy for the students to search the Yeah, yeah, okay, are yeah. you getting Okay. it? कि Yeah, फर्स्ट yeah, I पैसेज got it. इन्होंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में. फर्स्ट And चंक it को makes फर्स्ट it पेज में. easier, right? या इट मेक्स इट इजियर. ठीक है. Yeah. एंड Okay. सेकेंड पेज को सेकेंड स्टफ के साथ ऐड कर दिया. ठीक है. सो दीज Okay. आर द डिफरेंसेस. दैट्स इट. और कोई डिफरेंसेस? That's it. यस, दैट्स इट. एंड जो Okay. पैसेज रहेगा वो भी स्मॉल रहता है. पैराग्राफ एज कंपेयर टू आईएल्स रीडिंग, वो पैराग्राफ लेंथी रहता था. ठीक है. जो एकेडमिक में होता था ना, लेंथी पैसेज Mm-hmm. होते थे, पैराग्राफ्स की लेंथ भी लेंथी होती थी. ठीक है. बट Yeah. यहाँ पे शॉर्ट किया है. एक्सप्लेनेशन को, रीडिंग के स्टफ को थोड़ा डेप्थ मैनर में दे दिया. यू नीड टू थिंक इन अ डेप्थ मैनर. ओनली देन यू कैन सर्च द आंसर, बिकॉज लेवल थोड़ा सा बढ़ाया इस वे से है. ठीक है. नो डाउट पैराग्राफ शॉर्ट है, बट Mm. आंसर्स डेप्थ मैनर में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके कंपैरेटिवली ज्यादा. और देन Okay. यू कैन गेट योर आंसर. ओके. स्ट्रेट फॉरवर्ड Okay. आंसर्स इसमें नहीं होते हैं. Okay. Okay. ठीक है. बस ये पैटर्न चेंजेस है. एंड द थर्ड पैसेज ऑफ द जीटी आईएल्स रीडिंग इज सेम जस्ट लाइक द आईएल्स एकेडमिक. ओके. वही लेंथी पैसेज वैसे ही रहेगा. इकट्ठा सारा पैराग्राफ पैसेज होगा जिसमें Mm. 13 या 12 क्वेश्चन उस पर डिपेंडेंट होंगे, जस्ट लाइक आईएल्स एकेडमिक. तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड है, बाकी फर्स्ट एंड सेम है? सेकेंड. फर्स्ट एंड ओके, सेकेंड. फर्स्ट एंड टोटल सेकेंड. वी कैन ओके. से देयर आर 5 पैसेजेस. अगर हम नॉर्मल वे में बात करें कि पहले को 2 में डिवाइड कर दिया, सेकंड को भी 2 में डिवाइड कर दिया. ओके. ठीक पर है. वो होगा सेम ही टॉपिक, होगा पर सेम. उसको... यस. ओके. ओके. सिर्फ डिवाइड करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है. ओके. थर्ड को बिल्कुल आइल्स एकेडमी की तरह दिया हुआ है. ओके. ठीक है. बस दिस इज द डिफरेंस. राइट. सो टाइम मैनेजमेंट जो मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ कि क्या क्या फॉलो करो, देर आर 2 ways. ठीक है. डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, उनको कौन सा कंफर्टेबल लगता है वो फॉलो करते हैं. सो रीडिंग पैसेज 1 20 मिनट्स हम यूज करेंगे. ठीक है. एक पैसेज में जिसमें 17 मिनट्स टोटल हम पहले लगा लेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगर हमें लगेगा कि हम किसी क्वेश्चन में इन बिटवीन स्टक हो रहे हैं तो हम क्वेश्चंस को स्किप करके चलेंगे उस टाइम के लिए. ठीक है. विल ओके. फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस एंड विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस जो हमें इजीली मिलते जा रहे हैं. ठीक है. राइट. उसके बाद लास्ट के 3 मिनट्स हम स्पेयर रखे हुए हैं जो हमने 20 में से, वो हम लास्ट में 3 मिनट्स को यूज करेंगे जो हमारे लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे. ओके. ठीक है. सो ये वाला ट्रिक होता है एक. एंड सेकेंड वे जो है वो ये रहेगा कि हम टोटल 51 मिनट्स यूज कर लेंगे, 17 मिनट्स ईच पैसेज में. Okay? और लास्ट में जो 9 मिनट्स बचते हैं उनको हम लास्ट में यूज करेंगे सारा कलेक्टिवली जो हमने पहले छोड़ दिया था. सॉरी, इट्स मिस्टेक. Stuck was unable to find. Okay, I have written A, it's you. Okay. ओके. क्लियर. सो प्रेफरेबल इज द फर्स्ट वे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट पैसेज को कर रहे हो और देन सेकंड पे स्विच हो रहे हो तो इतनी देर में फर्स्ट का भूल जाओगे सारा कुछ. ठीक है. थर्ड पे आओगे तो फर्स्ट सेकंड बिल्कुल वैनिश हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू कंज्यूम और फॉलो दिस वे. और अगर ये नहीं होता है, स्टूडेंट्स फील लाइक हो सकता है मैम हम 17 में ना कर पाए, हमें कहीं पे 18 20 लग जाए, तो फिर वो रहते हैं कि बेटर है कि हम पहले 17 17 मिनट्स लगा के हमारा जो इजीली हमें सब मिलता जा रहा है वो हम सेव कर लें उतने मार्क्स, फिर बाद में हम फ्लूक्स या फिर थोड़ी सी 50% एनालाइजेशंस करके सर्च कर देंगे आंसर्स को. ओके. ठीक है. सो प्रेफरेबल यही है. ठीक है. अगर लगता है कि नहीं आपको डिपेंड, कुछ स्टूडेंट्स सेकेंड वे फॉलो करते भी हैं, आई कैन नॉट फोर्स स्टूडेंट्स, बट बेटर द फर्स्ट वे इज. ओके. And there are more strategies I'll let you know in the reading discussion. Okay. So वो भी ओके. करेंगे, इससे आपकी रीडिंग जल्दी क्रैक होगी. ओके. लाइक जल्दी से जल्दी कैसे आंसर्स आप सर्च कर सकते हो. ठीक है. आई कैन नॉट से इट्स अ स्पून फीडिंग. नो, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू लॉजिकली सर्च योर आंसर. But there are या. some ways like how to manage your time. Okay. So that let you know in the discussion time period. Okay. ओके. सो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रोसीजर है, लाइक उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है. मेथड है कि अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, देन पैसेज पे आइए, देन स्विच टू द पैसेज, फॉलो स्किम एंड स्कैन प्रोसीजर. डू यू नो स्किम एंड स्कैन प्रोसीजर? या.
स्किम। पूरा मतलब हाँ हाँ। बस फटाफट रीड करते जाओ, हाँ, नो डीपली नीड एक टू पैराग्राफ पे स्टक डीपली ये नहीं हो पूरा जाना। वो करने की जरूरत नहीं है। थॉरो आइडिया ले लो, यस। हम्म। सर्च द लोकेशन, जब आपको लोकेशन मिल जाए, रीड लोकेटेड लाइंस थॉरोली। फिर वो जो लोकेशन थी उस लोकेटेड लाइंस को आप अच्छे से रीड करो थॉरोली, उस पर्टिकुलर पॉइंट को रीड करो, देन रिलेट इट विद द क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड योर आंसर। ठीक है, सो ओके, तो थोड़ा सा। पहले पैराग्राफ पढ़ना, तो पहले मैं नो। कभी कभी क्या करती थी कि हम्म। पहले क्वेश्चन पढ़ती थी। हम्म। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना सही है या पहले पहले पैराग्राफ क्वेश्चन पढ़ना? पढ़ना, ये एक ट्रिक मैंने ऐड किया है इसमें, हम्म that you need to first read the question, search the demand of the question, हम्म okay, हम्म then passage पे switch हो जाओ, और फिर स्किम एंड स्कैन प्रोसीजर से लोकेशन गेट करो। लोकेशन जब मिल जाएगी उस पर्टिकुलर लोकेशन को अच्छे से रीड करो, लोकेटेड लाइंस को, फिर क्वेश्चन से रिलेट करो, एंड देन आपको डायरेक्टली हम्म। आंसर ही मिलेगा। आपके माइंड में क्योस नहीं होगा, यू विल नॉट बी हैविंग टू आंसर्स इन योर माइंड बाय दिस वे। ठीक है, एक ही आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, अगर आप पैराग्राफ को पहले पढ़ लोगे एंड देन यू विल स्विच द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस एज वेल, देन आपको लगेगा ये दो या तीन आंसर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक। दोबारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, एमसीक्यूज में मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो हम्म। एमसीक्यूज में तो बिल्कुल भी कोई और वे नहीं फॉलो करना चाहिए, दिस इज द परफेक्ट वे, और डायरेक्टली आंसर मिलता है। ओके। ठीक है, there are some do's and don'ts. Never read whole passage, just do skimming and scanning. When you get the हम्म location, then do not skip any single word. मतलब उस टाइम पे लोकेशन सर्च करने के बाद इसको थॉरली रीड करो। रिलेट योर आंसर एक्यूरेटली, कॉन्सेंट्रेट डीपली, डोंट लेट योर माइंड डाइवर्टेड वाइल रीडिंग। आपको इधर उधर का हम्म। ध्यान नहीं देना है, बिकॉज कंप्लीटली 1 आवर 59 मिनट्स कंप्लीटली 60 मिनट्स कंप्लीटली यूज करने ही है। Focus on accuracy and time management. Okay, so these are some do's and don'ts that you need to follow. Okay, ओके। so anything else in reading you want to ask? There are some minor changes only, not too much. या इट्स ऑल गुड। Yeah, okay. मैक्सिमम चीजें तो रजे आप जब डिस्कशंस लोगे तब सीखने को मिलेंगी, है ना। ये तो जस्ट एक या रिव्यू चल रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस दैट आई नीड। हम्म। मतलब वैसा, जैसे स्टार्टिंग में पूरा बेस बनाना इज डिफिकल्ट, बाद में प्रैक्टिस करना इज इजी। यस यस। Okay, so are you able to see the screen of IELTS reading writing pattern? यस। Okay, so there are two tasks and you'll be given 1 hour collectively. You need to manage time as per the tasks. Okay, task one and task two, right? So in in IELTS General, you'll be getting letter in task one. Okay, time management as per recommended by me is 20 minutes. You need to spend 20 minutes in task one. Okay, हम्म। so there's a letter and there are three kinds of letters: formal, semi-formal, and informal. ओके। Okay, the structure is you need to write your letter in 150 words. Okay, there is no maximum range, but if you write more, there will be more errors, there will be time consumption as well. So it's better to write just 160. Okay, and introduction, BP1, BP2, and conclusion. I'll let you know how to write a letter. Okay, this is ओके। the basic structure you need to follow. And this is a question like you are looking for a full-time job. This is a formal type of letter. Write a हम्म letter to an employment agency in your letter. So basically आप employment agency को एक letter लिखना चाहते हो, आपको लिखना है employment agency को, क्योंकि आपको full time job चाहिए। ओके, हम्म तो यहाँ पर आप किसी पर्सन उस पर्सन को लिखने वाले हैं जिनकी आप फैसिलिटी अवेल करते हैं। ठीक है, यू आर नॉट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर, लाइक दिस इज नॉट योर वर्क प्लेस। ओके, सो अगर आप किसी की फैसिलिटी ले रहे होते हो तो दैट कम्स अंडर सेमी फॉर्मल। ओके, आई हैव रिटन इट अंडर फॉर्मल बट इट इज सेमी फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर। ओके। Okay, just a second, there are some errors. Yes, it is a semi formal type of letter. Okay, just a second, I'll let you know.
what are three kinds of letter? It is not clear here. Just a second. Okay, see, there are three categories of letters: formal, semi-formal, and informal. Okay, so Okay. when you need to write a letter to your higher or lower authority at your workplace, right? It comes Mm, under formal. जहाँ पे अब वर्क प्लेस पे ही हम किसी को भी हायर अथॉरिटी को या लोअर अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं तो वो mm, फॉर्मल कैटेगरी के अंडर आएगी. ओके, एंड उसकी हम स्टार्टिंग रिस्पेक्टेड से ही करेंगे, ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड सर और मैडम और वट एवर द पर्सन इज, हु एवर द mm. पर्सन. ओके, इन एंडिंग हम फॉर्मल से, याद रखो फॉर्मल के एफ से कि फेथफुली से करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द बिट लाइक स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन. Okay. So फैमिली मेंबर और दूसरा सेमी फॉर्मल क्या होता है? वो इनफॉर्मल है. देखो स्टेप बाय स्टेप आते हैं. आपको क्लियर है? फॉर्मल क्लियर है? या सेमी फॉर्मल इज व्हेन यू नीड टू राइट अ लेटर टू दोज हुज फैसिलिटीज यू आर अवेलिंग, जिनकी आप फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हो. जैसे कि कोई न्यूज़पेपर लेते हो तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, या ओके ओके रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट के मैनेजर को आप कुछ लिख रहे हो. ओके, होटल में रहने गए या तो होटल मैनेजर को लिख रहे हो. ठीक है, ओके ओके तो कहीं पे भी कोई भी फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर सेमी फॉर्मल. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस द प्रीवियस कैटेगरी जिनकी आप जॉब जहां से लेना चाहते हो, है ना, तो वो सेमी फॉर्मल हुई ना. सो देयर इज अ मिस्टेक इन माय पीपीटी. ओके, ओके सो दैट्स व्हाई आई हैव ओपन दिस पेज. ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्टिंग रिस्पेक्टेड से ही करेंगे क्योंकि ये भी सेमी फॉर्मल ही है, इसमें भी हम फॉर्मल वे से ही चलेंगे. एंड एंडिंग करेंगे एस, सेमी फॉर्मल के एस से, याद रखना सिंसियरली, योर सिंसियरली, एंड एंडिंग में आप अपना ओके clear? So last is your informal letter where you need to write the letter to your friends and your family members. So here you can use dear, hello, directly आप hi John and all ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आप अपने फ्रेंड सर्कल को या फैमिली मेंबर्स को ही लिख रहे हैं. ठीक है, एंड एंडिंग आप इसमें yours lovingly एंड ऑल कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है, ओके हाँ. So these are the three types of letters which इनका कोई आपके पास वो है टेम्पलेट? yeah बने हुए हैं टेम्पलेट्स. ओके ओके Just a second, I'll share the first page, the previous PPT. Okay, ये देख लेते हैं, शायद ये ठीक हो. You are going to take a short holiday in Singapore and you want to rent a holiday apartment. Yes, ये एग्जाम्पल क्लियर है. ठीक है, सो ये आप कहीं पे कोई फैसिलिटी अवेल करने लगे हो तो इट कम्स अंडर सेमी फॉर्मल. ओके Informal is you stayed at your friend's house when you attended a conference in Australia. Unfortunately, you left a large envelope with some important documents in your room. So write a letter to your friend, right? So it comes under informal. Okay, so these are the things which you need to cover up in your answer. ओके So example is like, dear sir, yeah, respected, whatever you are writing. And paragraph one will be like, कि I'm writing this letter or I'm writing with regard to whatever the purpose is. वो हम यहाँ पे लिखेंगे in the first paragraph. Okay. And in the second, third and fourth will be adding the bullet points, just like these things. कि हम first में thank you कर रहे हैं, फिर हम describe कर रहे हैं कि हमारा envelope कहाँ रुक गया, रह गया है, रेफ्ट कहाँ कर दिया आपने. ठीक है, और आस्क हिम और हर टू रिटर्न इट टू यू बाय पोस्ट. सो ये तीनों चीजें हम यहाँ पर पैराग्राफ्स में 2, 3, 4 में ऐड ऑन करेंगे. ओके, एंड ओके आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. या फिर एंडिंग लाइंस आई विल गिव इट यू, बिगनिंग लाइंस एंड एंडिंग लाइंस दैट विल हेल्प यू इन योर राइटिंग द लेटर. ओके, एंड लास्ट में योर्स फेथफुली और सिंसियरली और ट्रूली वट एवर द टाइप ऑफ लेटर इज, आप ये लिख के देन योर फुल नेम. ओके So this is a basic way to write a letter. ओके There are some beginning lines.
ठीक है, so that you can use. I'll be sending it to you. Apologize कर रहे हैं या help के लिए या information के लिए, so you can use it. You can take help of these things. These are very much beneficial for the students. Okay, and some advanced words are also here. So सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You can just learn like satisfaction का कोई एक याद कर लिया, delighted या फिर thrilled कोई एक याद. हम्म। ठीक है, इस तरह से just one lines are enough for you. ओके। ये एक और एग्जाम्पल कि खुशबू वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर एट योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह से आप सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. देन यू कैन ऐड योर बुलेट पॉइंट्स, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. समटाइम्स बुलेट पॉइंट्स हमारे 2 में ही कवर हो जाते हैं, एंड इफ यू हम्म। 3 बनाने हैं तो 3 भी बना सकते हो. तो इसका मिनिमम क्या होता है नंबर? लाइक यू सेड 150 इज मैक्स, राइट? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम इज 150, नॉट द मैक्स. आई ओके। थिंक मैक्सिमम कोई रेंज नहीं है. मिनिमम इज 150. ओके। बट ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा गलतियां होंगी. दिस इज व्हाट आई हैव एडेड इन द. या एंड लेटर्स आर लाइक शॉर्ट, छोटे होते हैं ज्यादा। हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है आपको. 160 तक लिखो, इनफ है. ओके ओके, ठीक है. गॉट इट। या सो दिस इज ऑल अबाउट द टास्क 1. ओके, लेटर. एंड टास्क 2 इज ऐसे. आपने अगर ऑलरेडी किया है, बट देर आर सो मेनी इयर्स नाउ, है ना. इट हैज बीन सो मेनी इयर्स. हाउ मेनी इयर्स यू आर हियर, कनाडा? यहाँ तो 1.5 साल ही हुआ है। आइल्स मैंने, मेरी लास्ट ईयर अक्टूबर में एक्सपायर हुई थी, तो 2022 में दिया होगा शायद। 3 years back we can say. या। Okay, so essay time management is 35 minutes. I have made some templates also. If you want to follow, you can, because your requirement is very less, so you can easily use my formats. Okay. ओके। I have not published my formats online, so that is why it is working, right? So the task to word limit मैं is 35 मिनट्स लिखा है, तो yes, कितने 20. टाइम का होता 20 and 35. Like I have suggested you to consume 35 minutes. Okay. But है? overall, in टोटल कितने writing मिलते body, हैं? total you'll be getting 1 hour for writing. बोथ टास्क? Both tasks, you need to manage the time. Okay. So ओके preference is, suggestion is spend 20 minutes in task 1 and spend 35 minutes in task 2. You need to ओके, spare 5 मिनट्स टू 5 minutes. रीचेक। Yes, no, it's not for proofreading. You need to spare your 5 minutes because proofreading is already added in it. Okay, you need to ओके। um, spare your 5 minutes. Sometimes it can be used in task 1, or sometimes it can be used in task 2. Okay, so डिपेंड, and या there ओके। is the writing module which is on the starting, so it takes time sometimes. ओके। Okay, सो टास्क 2 इज सेम? yeah, task 2 is completely same. Okay, there is no difference of task 2. ओके। To understand the question, as per my suggestion, you can use this procedure to write an essay, and it will be very easy for you to make it. Okay. So understand the question. You need to use 2 minutes completely for understanding the demand of the question, what they're asking. Okay. There are two major things which need to be fulfilled in the initial stage. That is demand of the question, task achievement, and task completion. These are the two things we need to follow. Okay. Task achievement means whatever the question demand is, we are fulfilling that. Okay. And task completion is we are writing each and everything: introduction, body, paragraph 1, 2, and the conclusion. This is the basic format which you need to follow. Okay. ओके। So after spending 2 minutes, you need to plan your stuff, right? Planning and organization करिए, plan करो, get the ideas, then organize it, because sometimes हमारे mind में ideas जो आते हैं वो random आते हैं, so आपको उनको manage करना है, उनको organize करना है. ठीक है. Sometimes हमारा जो 7th idea है वो हमारा 3rd के साथ ज्यादा link हो रहा होता है. ठीक है. या। 5th idea जो है वो 8th के साथ हो रहा होता है. So अगर आप directly लिखना शुरू करोगे तो hodge podge हो जाएगा आपका stuff. Okay, and pen paper exam दे रहे हैं, तो you need to raise it first, then you need to add it, right? It takes lots of time, and it becomes like the page also becomes dirty. So it's better to plan or organize your ideas on the initial stage.
Okay. Mm, So after doing okay. planning, after spending these 5 minutes, then start writing your essay, and that requires 21 to 23 minutes. Okay. And after spending these timer, this 23 minutes as well, you'll be left with 5 minutes, and you need to spend these 5 minutes in proofreading. Okay. So if you follow this way, it will be very easy for you to write your essay, and that will be completely managed one, right? You can dedicate, like with the help of the formats, you can get 7 bands for sure. Okay, if you Okay. write without format, you can get 7+ as well, right? But my Okay. formats are working till 7 bands. Okay. Okay, so this is a question. For example, extreme sports such as skydiving and skiing are very dangerous and should be banned. Extreme sports means the adventurous sports. जो Mm-hmm. skydiving है and skiing है, ये बहुत dangerous हैं. These are risky Mm-hmm. and ये Mm-hmm. banned होने चाहिए. ठीक है? So to what extent do you agree or disagree with this view? ठीक है? So अगर कितना हद तक आप agree हैं या disagree हैं? So agree and disagree जो है उसको आप 70-30% कर सकते हो. और अगर आपने ये 70-30% नहीं करना तो इट्स सजेस्टेड बाय मी दैट यू नीड टू फॉलो द 100% वे. ठीक है, इजी Mm-hmm. 100% वन साइड जाओ, आपके लिए आंसर मैनेज करना इजी हो जाएगा. Mm-hmm. वन साइड लिखना, जैसे अगर हम कहते हैं कि 100% हम अग्री करते हैं कि ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं ये बहुत डेंजरस हैं और ये बैन हो जानी चाहिए इसी तरह से. Mm-hmm. ठीक है, सो इस वे से इजी हो जाएगा. सो आई हैव मेड सम आइडियाज. सो दीज आर सम प्लानिंग्स. एडवेंचर स्पोर्ट्स डेंजरस हैं, सो आइडियाज जो गैदर किए आप देखो, मैंने रैंडम किया, जैसे जैसे मेरे माइंड में आए मैंने लिख दिए. ठीक है, कि ये रिस्की होते हैं, इससे हाई चांसेस ऑफ इंजरीज हो सकती हैं, इससे लोगों की डेथ हो सकती है. Mm-hmm. समटाइम्स कुछ क्रॉनिक डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज और पैरालिसिस, राइट. और काफी सिचुएशन में कुछ अनफॉरसीन माल फंक्शंस हो सकते हैं जो हमें सोचे भी नहीं होते हैं. ठीक है, एंड फुल ऑफ डेंजर है, right? So I've added so many ideas here. Natural calamities can also be the reason of this risk in Mm-hmm. sports. Okay. I have written a manual problem as well, like if I'll be explaining in the next page. Okay. So faulty parachutes. Yeah, this is the manual problem because there are persons being hired for taking care of these stuff, the parachutes or the body suits which are being saved for which are the things required for pursuing these games. Okay. So if the person is not checking it completely, right? And without checking it, they are providing it to the candidates. Okay, so it is just like a manual problem now, because of the person, because of the mistake of one person, the other person is facing, right? So Mm-hmm. these can cause the fatal results. Okay, so these ideas I have gathered, right? So, but these are not organized. Okay, I have Mm-hmm. 3 minutes to just gather the points, right? So now I'm doing the organization of it. So I'm thinking, I'm writing that first point is risky. Then risky से जो link होता है idea, ये क्यों risky है? Because ये जो adventure sports हैं इसमें high chances of injuries हो सकते हैं. वो Mm-hmm. injuries कैसी हो सकती हैं? ये सब हो सकती हैं, paralysis या brain damage, कुछ ऐसे chronic diseases हो सकते हैं. ठीक है? So 1, 2, 3 are interlinked, right? नेक्स्ट हैव रिटर्न की अनदर रीजन है नेचुरल कैलेमिटीज. वो कैसे हो सकते हैं? जैसे फ्लड्स और हेवी वेव्स एट एनी टाइम आ सकती हैं. इफ अ पर्सन इज Mm-hmm. diving, then he can drown in the water because of the natural calamities which can be occurred any time. Mm-hmm. Okay, so 4, 5, 6, right? And seventh one is many situations unforeseen, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं होता. Then 4, 5, 6 and 7, this is linked. Okay, all these can happen. Next one is the manual problems, like body suits, leakage, faulty parachutes, इसके fatal results हो सकते हैं, which can be full of danger and it can lead to death. So in this way, Mm-hmm. you can organize your ideas, right? So with the help of these things which I have made, right? ये organized stuff जो मैंने बना लिया, इसको देख के जब आप essay लिखोगे, it will become very easy for you to write your essay. And in less than 23 minutes you can easily write it. Mm-hmm. Okay, Right. and it Okay. will be completely managed as well. ठीक है, so I have made